पर्पज MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं भारत के सभी, बागेल साहब, मैंने भारत में लोकसभा की लाइब्रेरी आपकी बहुत अच्छी है, बट आपने भारत की विधानसभाओं की लाइब्रेरीज और एजुकेशन सेंटर्स कहाँ पे है? पूना की महानगर पालिका है, जिला परिषदें है, पंचायत के सेंटर्स है। 30 लाख से ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे भारत में, 30 लाख से ऊपर दोस्तों। और हमारे लोकतंत्र में अगर आपके जैसे इंजीनियर्स, आज इंजीनियर्स डे भी है, इंजीनियर्स डे की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बागेल सर, आप यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम इस तरीके से पूरे विधानसभाओं में अगर आने वाले समय में प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ हम सब लोग जानते हैं, बट मैं सॉल्यूशन के तौर के ऊपर आपके सबके सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि अपने सभी विधानसभाओं में, जिला परिषदों में, अपनी बाकी भी इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके के गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, लीडरशिप और लाइब्रेरी के सेंटर्स, नॉलेज के सेंटर्स तैयार होने चाहिए। महाराष्ट्र के अपनी विधानसभा में मैं बीच में गया था, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। केरला का काम थोड़ा सा अच्छा है, कर्नाटका का भी मैंने विधानसभा का काम वहाँ पे देखा है कैसे फंक्शन होता है, बिकॉज काफ़ी विधानसभाओं के साथ काम करने का हमारा मौका पिछले MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और भारतीय छात्र संसद के माध्यम से आया। और आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपने सबने इस विषय में रुचि लेनी चाहिए। हमें एक्टिव सिटीजनशिप देश में बहुत ज़रूरी है। वी कांट ऑल द टाइम गो अवे एंड से कि ये हमारा काम नहीं है। हम चाय पीते पीते क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट लोग, टेक्नोक्रेट, साइंटिस्ट, बाकी सभी फील्ड के लोग, हम इस तरीके का जब भाष्य करते हैं कि भाई ये सब वहाँ पे बुरा हो रहा है और हम दूर से देखते रहे, तो आपको तय करना है कि वेदर डू यू वांट टू गेट रूल्ड बाय गुड पीपल और डू यू वांट टू गेट रूल्ड बाय बैड पीपल। ये आपके हाथ में है। हम कितने % लोग भारत में वोट करते हैं, तो ये सब चीज़ें अवेयर करने के लिए आप सब लोगों के सामने हमने ये भारतीय छात्र संसद, ताकि कल जाके आप जब इस संस्था से ग्रेजुएट होकर पास आउट होंगे तो एक कंप्लीट ग्रेजुएट, एक होलिस्टिक ग्रेजुएट, जो सही मायने में परिपूर्ण ऐसा ग्रेजुएट इस संस्था से बाहर निकले, ये हमारी एम्बिशन है। और जैसे कि आप जानते हैं सब लोग कि राजनीति के सबसे ज़्यादा, मतलब लोकतंत्र में हमारे सबसे 4 शत्रु कौन है? करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। हम एक तरफ बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं और एक तरफ ये सब भूत धर्म का, जाति का, ये भी हमारे सबके युवकों के भी मन में, हमें कभी पता नहीं था, बट काफ़ी सारी चीज़ें बिना बात की ये सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से हमारे सबके मन में एक दूसरे के प्रति कुछ दुराग्रह निर्माण हो जाता है। तो मैं बागेल सर, मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी लिखी, बाकी सभी भारत के विधानसभाओं में भी सभी MLAs को, चीफ मिनिस्टर्स को, सबको मैंने इसके बारे में अवेयर कराने के लिए कि भाई हमें किस तरीके से आने वाले समय में पॉलिटिक्स में अगर कुछ बदलाव लाना है तो किसी भी सेक्टर में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट कोई पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्ष नहीं बना सकते भारत में कि हम सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये नहीं, हमारे कार्यकर्ता या हमारे जो ऑफिस बेयरर्स है ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये बड़ी सिंपल चीज़ है। इंजीनियरिंग में JEE में कितने मार्क्स चाहिए, नीट में कितने मार्क्स चाहिए, हमारी यहाँ पे बाकी के एग्जाम्स में कितने मार्क्स चाहिए, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है किसी भी शिक्षण संस्था में। उसी तरीके से राजनीति में अगर आना है, इज इट पॉसिबल एंड द टाइम हैज कम। ऐसा मुझे फर्मली लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्षों ने इकट्ठा आकर अगर प्रण लिया और एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया कि हमारे आने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो या हमारे पार्टियों के ऑफिस बेयरर्स हो, एक इस तरीके का उनका क्राइटेरिया अगर राजनीति में आना है तो ऐसे बहुत छोटे चीज़ों के माध्यम से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ कहने की इच्छा है। और मैं ये माध्यम से बार बार कहता आया हूँ, आप सब लोग भी इसके बारे में सोचिए कि पॉलिटिक्स ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अविभाज्य भाग है हमारे लाइफ का। आप किसी कारखानदारिता में, कॉरपोरेट में भी जाएंगे तो वहाँ पे 10 लोगों का ग्रुप आएगा तो पॉलिटिक्स होगा, बट पॉलिटिक्स फॉर ए डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिक्स एक डिसीजन मेकिंग के लिए हमें अनुमति देता है और फास्टर अगर, और उसका सही मायने में एक स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है तो हम आसानी से निर्णय लेके बहुत फास्ट पेस में जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 75 साल की आज़ादी बहुत बड़ा पड़ाव, हमने बहुत कुछ हासिल किया, बट काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस हमें अगर फास्टर तरीके से अगर कवर करने हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है राजनीति का आध्यात्मिकरण। एजुकेशन में अपने इस तरीके का 11, 12 स्कूल एजुकेशन में खाली नागरिक शास्त्र हम 8, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो इनफ है। बट द टाइम हैज़ कम कि हमारे हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में लाखों विद्यार्थी पढ़ते, तो हम इसमें ये डॉक्ट्रिन अगर हमने आज अगर ये डाला
तो शायद 20-25 साल बाद की जो पीढ़ियाँ बाहर निकलेगी वो एक अलग तरीके से परिपूर्ण ऐसी पीढ़ियाँ बाहर निकलेगी। लास्ट में जाते जाते बघेल साहब, मैंने दूसरी एक बात बोली थी कि इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाए। ये भी एक कैंपेन हमने, कॉलोनियल माइंडसेट ब्रेकिंग। 75 साल बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया, मद्रास का चेन्नई हो गया, कलकत्ता का कोलकाता। तो ये ब्रिटिशर्स ने हमें या उससे पहले भी लोगों ने हमें इस तरीके के नाम दिए, और हम मेरा खुद का नाम राहुल मेरे पिताजी ने माताजी ने दिया। और हर कोई छोटा सा बच्चा भी अपने इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने अस्तित्व के लिए झगड़ता है, या और वो उसी अस्तित्व से ही उसकी ऊर्जा तैयार होकर जो भी इनोवेशन आगे चल के एजुकेशन और रिसर्च की जो भी बात आप टेक्नोलॉजी के आने वाले समय में करो, तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में आगे जाता है दोस्तों। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि इस बारे में भी सोचिए कि 75 साल की आज़ादी में एक कैंपेन हमने यहाँ किया, सबके सिग्नेचर्स चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को वो सिग्नेचर्स लेके हम भेजना चाहते हैं कि इंडिया ये शब्द प्रयोग ग्रामीण इलाके में भारत हम बोलते हैं, बट डे टू डे में भी शायद 10-20 साल बाद हम भारत अगर बोलेंगे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा रिसर्च, और ज़्यादा डॉक्टर शिवाजी, रिसर्च इनोवेशन भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी से, ऊर्जा से तैयार होता है। प्रधानमंत्री जी ने जब आपको हक किया, इमोशंस पैदा हुए, पूरे देश में इमोशंस आ गए कि भाई ये क्या है। एक शास्त्रज्ञ को, ये देश का राजनेता, इतने बड़े एपेक्स हमारे प्रधानमंत्री उनको हक कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो ऊर्जा से आज डॉक्टर शिवाजी के माध्यम से कितना कुछ काम इसरो या बाकी भी सभी समाज में कितना हो रहा है। तो आप सब लोग इस तरीके से पॉलिटिक्स या भारतीय छात्र संसद की तरफ देखिए। 3 दिन में बहुत सारे दोस्त बनाइए, एक दूसरे में मिंगल हो जाइए, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि आप इसको बदलाव लाने में ये जो कैटलिस्ट की तरह भारतीय छात्र संसद रोल प्ले कर सकता है। और लास्ट में इवन मैंने ये भी बात बोला था कि इंडिपेंडेंस डे, मेरा बेल बज गया, मेरा टाइम इज ओवर, तो इंडिपेंडेंस डे का नाम भी बदल के मैंने बोला नेशनल डे बना सकते हैं क्या। मैंने दूसरी बात बोली कि भाई मुझे किसी ने इंडिपेंडेंस दिया, राहुल कराड़ को किसी ने इंडिपेंडेंस दिया, तो उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं गुलामी की बू आती है, तो इसको हम नेशनल डे कह सकते हैं। और तो ऐसे हम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजपथ का नामकरण बदल के कर्तव्य पथ किया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो हमें सबको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा। मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर श्री महाजन जी, चंद्रकांत पाटिल जी एंड श्री महाजन जी, दूसरे हमारे युवा मिनिस्टर, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। पूरे भारत के मंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी इस पर्टिकुलर विषय को सपोर्ट करने के लिए। पिछले 12 सालों में बाकी भी मंत्रियों ने बहुत, राजेश टोपे जी पहले दिन से उन्होंने बहुत यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया, जो पहले शिक्षा मंत्री थे एनसीपी गवर्नमेंट में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि चीफ पेट्रन है इसके, इस पर्टिकुलर भारतीय छात्र संसद के, जब मुख्यमंत्री वो थे तब भी थे और अभी भी वो है। तो मैं उनका भी यहाँ से मन से यहाँ पे ग्रैटिट्यूड व्यक्त करके आप सभी स्टूडेंट्स को अगले 3 दिन में बहुत अलग अलग वक्त आएंगे, इवनिंग में भी इसी तरीके का डेकोरम एंड डिसेंसी आप बनाए रखिए, स्टूडेंट टू स्टूडेंट कनेक्ट, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग विषय हमारे टीचर्स ने यहाँ पे कमिटमेंट से आपके लिए डिज़ाइन किया है। सभी डीन डायरेक्टर्स, उनका भी मैं यहाँ पे मन से अभिनंदन करता हूँ कि ये आयोजन आपके सबके कार्य की वजह से सफल होने जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for the words of wisdom, the vision that you have shown, and it is a true reflection that the government of India and the national sentiment reflects your thoughts, sir. The thought that you brought last year, breaking the colonial mindset, which was brought by Sri Rahul V. Karad, the renaming of Rajpath, I think it echoes the thought of Sri Rahul V. Karad of breaking the colonial mindset. Thank you, sir. Thank you very much. And I now request, as per the tradition of the platform of 12th Bharatiya Chhatra Sansad, I request Sri Rahul V. Karad, sir, to kindly felicitate and welcome the dignitaries for this inaugural session. First and foremost, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the chief guest of this session, Honorable Minister of State for Law and Justice, Government of India, Professor S.P. Singh Baghel ji. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, Honorable Minister for State for Law and Justice, Government of India, Chief Guest of this session, Professor S.P. Singh Baghel ji.
Now I request sir to kindly felicitate and welcome the former chairman of Indian Space Research Organization, the special guest of honor of this session, Dr. K. Sivan sir. मिलजुल कर अब काम करेंगे, आओ अब कुछ बात करेंगे. Please welcome with a big round of applause, Dr. K. Sivan. जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की. I now request sir to kindly felicitate and welcome the special guest of honor of this session, Padma Bhushan, environmentalist, green activist and founder of HESCO, the guest of honor, Dr. Anil Prakash Joshi ji. Please welcome with a big round of applause, my friends. I now request sir to kindly felicitate and welcome the special guest of honor, CEO of JK Enterprises and Director in JK Organization, the special guest of honor of this session, Shri Anant Singhania ji. I now request sir to kindly felicitate and welcome a person who is blessed with beautiful voice, the noted classical vocalist, the special guest of honor, Madam Kaushiki Chakrabarti. Bharatiya Chhatra Sansad. Please give a big round of applause for all the dignitaries on the dais. Thank you very much. And now it's indeed my honor and privilege, the person whom you're responding to with a huge round of applause and loud noise. But before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Dr. K. Sivan. Shri Kailas Vadivu Sivan has held positions as the chairman of the Indian Space Research Organization and the Secretary of the Department of Space. He has previously served as the Director of the Vikram Sarabhai Space Center. Dr. Sivan is his family's first graduate. In 1980, he earned his bachelor's in Aeronautical Engineering from Madras Institute of Technology. In 1982, he graduated from the Indian Institute of Science in Bangalore with a master's degree in Aeronautical Engineering, and he immediately began working with ISRO. In January 2018, Dr. Sivan was named the Chief of the Indian Space Research Organization. Under his stewardship, ISRO launched Chandrayaan-2, the nation's second expedition to the moon. We warmly welcome Dr. Kailas Vadivu Sivan. Please put your hands together and welcome with a huge round of applause, Dr. K. Sivan. Good morning to all of you. In fact, it's a confusion. It's a very morning or afternoon. It's exactly 12 o'clock. But I'm keeping it this one and make it good morning. It's 12 o'clock. Most respected Reverend Professor Dr. Vishwanath K. Karat, Honorable Minister of State for Law and Justice, Professor S.P. Singh Bagal, Sri Rahul Karat,
Dr. Chitnis, Sri Anand Shingania, Dr. Anil Prakash Joshi, Dr. Srimati Kaushi Chakrabarti, Sri Vijay Kumar Sinha, all dignitaries on the dais and dignitaries in front of the dais. I know one dignitary, that is Karthikeyan sir, and other the dignitaries in front of me. And most importantly, my dear young friends, it's a very pleasure for me to be part of this session. We always have worked with technical information, scientific this one, but it's a different experience for me after I came here. In fact, I am glad to be part of Bharatiya Chhatra Sansad and congratulate the largest classroom of India incepted by Mr. Rahul Karath in 2011 to initiate the spirit of public leadership among youths of today and also to inculcate right values in them. The student leaders from all ideologies assemble and contribute to this exclusive conclave to voice their opinion so that healthy democracies evolve. Mr. Rahul Karath has also set up a unique institution, the MIT School of Government, as one of its kind in India and Asia in 2005 to offer training to educated youth who are desirous to make career in politics. I am pleased to know that the educational institutions like MIT have come forward to take the mission of putting educated youth in the forefront of active politics and create a system which will produce competent public leaders and policy makers from the grassroots and all walks of life. My compliments and congratulations to MIT School of Government for doing exceptional service. In fact, when somebody is asking what you are going to do, many people tell, I want to become engineer, I want to become Abdul Kalam, I want to become Einstein, like this. Very, very few people only will tell that I want to become a political leader. And having a university for politics is a really wonderful idea. It is, in fact, it is essential to shape the young minds in the politics in the initial days itself so that they can do better in later years. So the initiative taken by Professor Vishwanath Karath and Rahul Karath really appreciate you. It's a really fantastic idea, I would say. Let me congratulate and compliment them once again. When we are talking about the services, I would say we always in India, we are thinking about the service not just like that. It is for the national benefit. In fact, I am going to talk about one such service, initiated some 60 years back, when the space technology was utilized mainly for distracting others and show empowerment over others. One person from India, innovative way he was thinking, how to make use of this destructive technology in a constructive way. And he thought that India is the right place to implement the space technology
for societal applications. What he did was, India is a vast country and 75% of the people are staying in the rural area. For India to develop, the advanced technologies have to reach the rural area. And Professor Sarafai was thinking space technologies as a tool we can use effectively for taking the advanced technology to the rural area. Only thing is, how to do it? The technology is not with us, it's with outside country. Before that, I wanted to ask you, the space technology, do you know where it is started? How many of the students who are knowing where this is the space technology started? In fact, space technology started 250 years back in India itself. India was the first country to make use of rocket for working against a British army. This technology was taken to Germany, England. From England, it has gone to Germany. From Germany, it has gone to USA. From there, it has gone to USSR. Finally, very interestingly, we are going and buying the technology from them. Our own technology, we are given to them, and we are buying from them with a cost. This is a very interesting feature. Okay. Now, once that the technology is required for benefiting the India, how to do it? It is available in the elsewhere. If we are taking the technology from there, it is very, very costly. It is impossible. In order to provide the service effectively, in a cost-effective way, uninterrupted way, he thought this technology to be generated indigenously, self-sufficient. Whatever our Honorable PM is talking about, Atmanirbhar Bharat, self-sufficiency. This was implemented in 60 years back in one area, the space technology area. And I am very happy that such type of efforts are being for the other area also to make the India to self-sufficient. It's a great effort government of India has taken. Now, based on the effort done by this Vikram Sarabhai, we have developed indigenously all the technologies required for satellite, all the technologies required for rocket and data dissemination. Now, one area India is self-sufficient is space technology. In fact, for applications of the space technology for the benefits of the common man, India is number one. There is another point. This also we have to understand. Now, how the space technology is used? In fact, when I became chairman of ISRO, one day during my son's the wedding, engagement day, when I was sitting on the stage like this, one old person was scratching my back. He asked, "Who are you?" I told, "I am the boy's father." After 5 minutes, he again scratched. "What you are doing?" I told, "ISRO, chairman." Again, he was not convinced. He asked, what ISRO is doing? Very interestingly, my own village person doesn't know what ISRO is doing. ISRO is actually not doing rocket. Its aim is not for Chandrayaan-2. Its aim is not for MOM. The ISRO's aim is to do the services or benefits of the space technology to bring it to common man. That's what it is doing. And what is the technology? I will tell you. Sometime back,
That is, whenever a cyclone is hitting that east coast area, we used to see from that newspaper 22,000 people killed, 40,000 people killed. Now, based on the satellite images, we are able to predict the whole thing in advance, and the government is taking advanced action so that now the casualty is only 5 people or 6 people. You understand the advantage. And another one is when we talk about the fishermen, when they are going to the sea, they are not able to find where the fish are available. Now, ISRO has developed an app. This app is just to keep on the pocket. The fisherman doesn't require to know the English. It will show the arrow from where you go. And by following that one, these people will be going and buying, taking so much fishes. That is, when they are returning, their boat is full of fish only. But they are not reducing the cost. That is a different aspect. Still, they are maintaining the cost, but they are getting more yield. This is the type of thing. And what I would say is, at present, every minute, every second life of the common man is one way or linked with the space activity. Suppose satellite is not functioning, your broadband connectivity is not there, you cannot see the game, you cannot have the phone, you cannot see internet. The satellite is not functioning, you cannot go to the ATM for taking money like this. So, at present, the entire the community, the citizen is one way or linked with the space technology. It is not only space technology. Our Honorable Prime Minister has taken initiative in 2015 itself how to make use of this technology for the governance, mainly for making more and more government schemes. This space technology is being introduced by our Honorable Prime Minister. So that way, the space technology is good for a thing. Now, what is else? Is it sufficient? Definitely, our Honorable PM is always thinking in ahead. If we are going with this mode of working, definitely it is not sufficient to catch the economy. The world space economy, India's contribution is just 2%. Is it sufficient? How to make it bigger? So we have to expand that activities of space activities in India. So Honorable PM have a vision of bringing the space sector reform. By this process, he allowed that private people also to do the space activities, and by doing this one, definitely that is that the people will be enjoying the benefits of the space technology, and they are doing. And when we are doing such type of activity, definitely we will become #1 in the global level. And I wanted to just give some few minutes. I will finish this one because I want to give advice for our friends. This advice I will give only in two forms. One form is, in Kerala there was a village. There's a competition that some people have to jump and cross a pond. The pond is full of crocodile. And whoever is crossing the pond, they will get a 10 chain. Nobody was willing to cross. And everybody was standing. Suddenly, one person jumped inside and he crossed and he won the thing. And everybody was appreciating. He was so great. Finally, that fellow told, "Arada patti agatakalli." He asked, somebody else pushed him inside. Not he jumped. Somebody has pushed him inside.
At that time, his wife was leaving from the crowd. His wife only pushed him, this one. So what I'm telling is, please, I want youngsters, please jump into the activity, jump into that task. Without jumping, definitely you will not swim. You take a decision, and the decision can be anything. You need not worry about that one. Any decision is okay. You take and you work on present, with a present mode. Don't bother about what's happened earlier and don't bother about future. With that, definitely you can come in a great way. Let me wish all of you the great days ahead. Thank you once again for the great opportunity. Jai Hind, Jai Bharat. A big round of applause, my friends, for Dr. K. Sivan, sir. Thank you very much, sir, for your words of wisdom. Thank you very much for coming all the way here and sharing your thoughts with the participants of 12th Bharatiya Chhatra Sansad. And yes, my friends, as Honorable Vice Chancellor mentioned in his address, that this platform is by the students for the students. And the reflection of the same is now, I would be inviting the first student leader of 12th Bharatiya Chhatra Sansad to address the gathering. Please welcome Nandita Jamwal. नई सोच ही राजनीति के निर्देशा का निर्धारण करती है और इसी सोच के साथ मैं भारत के उत्तरी राज्य मंदिरों के शहर जम्मू कश्मीर से आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और मुझे गर्व है और ये मेरा स्वप्न है कि मैं इस लोकतंत्र का अहम हिस्सा बनूं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ MIT का जो मुझे और मेरे जैसे कई युवाओं को मौका देती है बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र एवं डायनेस्टिक लीनिएज के दायरे से आगे बढ़कर इस मंच पर आके अपने विचारों को प्रकट करने का। Near about 50% of Indian population is under 25 years of age. तो क्या ये कहना गलत होगा कि हम युवा युग में जी रहे हैं? लेकिन इसके बावजूद भी देश के युवा को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से अलग रखा जाता है। A political system is the lifeline of the country. और बात चाहे बदलाव की हो, आगे बढ़ने की हो, महंगाई चढ़ने की हो या फिर रोजगार की हो, देश का युवा न्यू इंडिया का आधार स्तंभ है। Therefore, the young population should head to the place which matters the most, and that is the parliament. भारतीय छात्र सांसद एक ऐसा मंच है जहां हम जैसे युवा जो ना ही केवल बदलाव की आस रखते हैं बल्कि उसका कारण बनना चाहते हैं, ये हम सबको अपने विचार प्रकट करने का सौभाग्य प्रदान करता है। आज हम सब मिलकर यहाँ कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहते हैं जो ना ही केवल राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्व रखते हैं। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम सब जानते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, बट वेयर टू ड्रॉ द लाइन। दूसरा, डायनेस्टी, द अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। थर्ड, डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेटोक्रेसी, वेयर डज द एक्चुअल पावर लाइज। फोर्थ, लेस भारत मोर वेस्ट, द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ भारतीय सिनेमा। काफी चर्चित विषय, भारतीय मीडिया, रूल्ड बाय नॉइज और रूल्ड बाय लॉ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। Is it actually possible in the most diversified country like India? अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसी राजनीतिक असफलताएं हैं जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस मंच का जोरदार उपयोग करें और अपनी आवाज को क्लीन पॉलिटिक्स और गुड गवर्नेंस के लिए यूज करें, क्योंकि समय आ चुका है जब हमें मिलकर इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में लगी धीमक को हटाना होगा और अपने भारत राष्ट्र को और महान बनाना होगा। तो आइए एकजुट होकर संघर्ष करें, क्योंकि मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है, युवाओं के हाथ में देश की तरक्की होती है। जय हिंद, जय भारत। A big round of applause for Nandita Jamwal, all the way from Jammu and Kashmir. I request Shri Rahul Karat sir to kindly felicitate and congratulate Nandita Jamwal. Heartiest congratulations, Nandita.
now request Dhirendra Singh from Punjab to address the gathering. हेलो। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी अति विशिष्ट महनीय लोगों को मेरा आकाश भर प्रणाम। मैं धीरेन्द्र सिंह, भारतीय छात्र संसद पंजाब प्रांत का स्टूडेंट लीडर, यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों का इस दिव्य और भव्य आयोजन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे समक्ष हजारों की तादाद में युवा पीढ़ी उपस्थित है। मैं आप सबसे मुखातिब होते हुए ये कहता हूं कि युवा कोई उम्र नहीं होती, युवा एक सकारात्मक सोच होती है। युवा मतवाले हाथी की तरह निरंकुश, तूफानी वर्षा की तरह प्लेनकारी प्रबल प्रचंड, बहरबी संगीत की तरह मधुर, उज्जवल प्रभात की शोभा, संध्या की बेला, चंद्रमा की शीतलता, जेठ की तपती दोपहरी का ताप और ज्वालामुखी सी दहकती आग होता है। और उसे अगर एक नकारात्मक दिशा मिल जाए तो वो कभी दिल्ली की सड़कों को टायरों की कालिक से पाट देता है, तो कभी अपनों के लहू से इस देश की सड़कों को लाल कर देता है। परंतु मुझे आज इस बार भी भारतीय छात्र संसद के मंच से खड़े होकर ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 12 साल से निरंतर चली आ रही ये प्रथा न केवल इस देश के युवाओं को एक सकारात्मक दिशा दे रही है, बल्कि हमें सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक और लोकतांत्रिक रूप से मजबूत और जागरूक कर रही है। भारतीय छात्र संसद हमें जागरूक करने के साथ साथ इस देश के युवाओं को एक नया मुकाम देने का काम कर रही है। भारतीय छात्र संसद का उद्देश्य है कि राजनीति रूढ़िवाद और वंशवाद की परंपरा को तोड़कर वास्तविकता के मनुस्थल में कदम रखते हुए सामर्थ्यवान और योग्य लोगों के हाथों में जाए। इसी का कारण है जो आज भारतीय छात्र संसद से निकलकर हजारों युवा अलग अलग राजनीतिक दलों के अंदर उच्च पदों पर काम कर रहे हैं, उच्च पदों पर उपस्थित हैं और इस समाज के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 11वीं भारतीय छात्र संसद के अंदर बतौर स्टूडेंट स्पीकर बोलने का मौका मिला। फिर वो खबर मेरे शहर में कई अखबारों में फैली और उसके बाद मुझे राजनीति में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा चुनाव प्रचार में बतौर वक्ता के रूप में बुलाया गया और मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग मंचों पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। और साथ ही अगर मैं स्टूडेंट लीडर की बात करूं तो बतौर स्टूडेंट लीडर मैंने पंजाब के अंदर BCS के लिए बहुत सारा काम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करी, अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में गया और मुझे आज यहाँ बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब से मैं एक बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को और प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को अपने साथ यहाँ पर भारतीय छात्र संसद में लेकर आया हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है भारतीय छात्र संसद ही पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र इकलौता ऐसा मंच है जो अभिव्यक्ति की आजादी, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा करेगा, जो लोकतंत्र और निगमतंत्र के बारे में हमें सचेत करेगा, जो भारतीय मीडिया पर प्रहार करते हुए हमें जागरूक करेगा, जो भारतीय सिनेमा की अच्छाई और बुराइयों को सरेआम उजागर करेगा, जो हर राजनीतिक दल के अंदर वंशवाद की पोल खोलेगा, जो इस देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता जैसे विचारों पर चर्चा करके उनको हल निकालने की कोशिश करेगा। क्योंकि और अच्छी बात तो यह है कि इन सारे विषयों पर चर्चा इन विषयों में निपुण और प्रसिद्ध लोगों के समक्ष इस मंच के माध्यम से होने वाली है। इसीलिए मैं अंत में आप सबसे जाते जाते ये कहता हूं कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ईमान निकलेगा, दिलों में कुछ बड़ा करने का अरमान निकलेगा और मेरी पीढ़ी के ये युवा भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। वाह, कांग्रेचुलेशंस धीरेन्द्र सिंह, बहुत बहुत उम्दा विचार और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आपने अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए। Heartiest congratulations. Yes, you saw the energy of the movement of Bharatiya Chhatra Sansad. Once again, a round of applause for Nandita and Dhirendra for putting their thoughts from this stage. And now it's time when I invite the special guest of honor of this session to address the gathering, Padma Bhushan, environmentalist, green activist and founder of HESCO, the special guest of honor, Dr. Anil Prakash Joshi ji. But before I invite him
to address the gathering, I request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri Joshi ji. Dr. Anil Prakash Joshi is an environmentalist, green activist, and the founder of Himalayan Environmental Studies and Conservation Organization, HESCO, a Dehradun-based voluntary organization. His work majorly includes developing sustainable technologies that are ecology-inclusive economy for ecosystem development. He has coined GEP, Gross Environmental Product, an ecological growth measure parallel to GDP. GEP has been accepted as a growth measure by the state of Uttarakhand on 5th June 2021. Dr. Joshi has launched several social programs based on resource-based rural development, such as Women Technology Park, Technology Intervention for Mountain Ecosystem, Ecological Food Mission in Mountain, and Women's Initiative for Self-Employment, and has been reported to be successful in providing the villages with water mills, composting pits, toilets, plant-based drugs, and herbal pesticides and rainwater harvesting techniques. He was selected as the Man of the Year by Week magazine in 2003. He is a recipient of the Jamnalal Bajaj Award and is an Ashoka Fellow. The Government of India awarded him the 4th highest civilian honor of the Padma Shri in 2006 for his contributions to Indian society. He was also awarded the Padma Bhushan, the 3rd highest civilian award in 2020 for environmental conservation in Uttarakhand. We warmly welcome Dr. Anil Prakash Joshi. Please put your hands together and welcome with a round of applause Padma Bhushan Dr. Anil Prakash Joshi ji. सबसे पहले मैं इस देश की सबसे बड़ी संसद को प्रणाम करता हूं। आप उससे भी बड़ी संसद हैं जो देश चलाती है, क्योंकि आप हमारा भविष्य हैं और इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा बड़ा परिचय, मुझे लगता है कि अगर मुंबई को फिनेंशियल कैपिटल कहा जाता है और दिल्ली को पॉलिटिकल, तो हम हिमालय के लोग हैं, हम इकोलॉजिकल कैपिटल हैं जो आपको हवा, मिट्टी, पानी देती है और जिसके बिना आप जी भी नहीं सकते, ये तो आपको स्वीकारना पड़ेगा। अभी मुझसे पहले हमारे मित्र डॉक्टर शिवन्ना ने आपको चंद्रमा तक पहुंचाया, मैं आपको धरती पे लाना चाहता हूं, क्योंकि आपको शायद पता ही होगा कि इस दुनिया में अगर हम बहुत तेजी से कुछ खो रहे हैं तो हवा, मिट्टी, जंगल, पानी। जब दुनिया आगे बढ़ रही थी तो 1800 शताब्दी के आसपास एडम स्मिथ एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न इकोनॉमी का फादर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस थी, इकोनॉमी का इनसिक्योरिटी थी उस समय। और तब शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जेम्स वॉट का इंजन आया, फिर दूसरा रिवॉल्यूशन आया, हमने हैंडीक्राफ्ट से मशीन क्राफ्ट में चले गए, और फिर तीसरा आया डिजिटल वर्ल्ड हमने बना दिया, और हमने कहा कनेक्टिविटी, शायद डिजिटल वर्ल्ड ही सबसे बड़ी कनेक्टिविटी हो। मेरी दृष्टि में वो कनेक्टिविटी नहीं थी, उसने आपको डिस्कनेक्ट किया अपने घर से, अपने दोस्तों से और अपनी समझ से। मोबाइल जिसने आप सबको अलग किया है, और ये सब कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम पे हुआ। चलता गया भारत 1947 में जब स्वतंत्र हुआ, 75 साल हमको भी हो गए सोचने समझने के, हमने भी बड़ी प्रगति की और हमको धन्य धान्य होना चाहिए इस देश में कि हमने बड़े आयाम तय किए दुनिया में। अब हम भी 5वीं बड़ी ताकत बन चुके हैं और इसके लिए प्रणाम करना चाहिए उन सबको जिन्होंने इस पर एक बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन शायद हम सबको स्वीकारना पड़ेगा कि वो कौन सा मॉडल था दुनिया का जो हमने भी स्वीकारा, क्योंकि एक बड़ा सवाल
पहले इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी थी, अब इकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी है। आपके हवा, मिट्टी, जंगल, पानी सारे संकट पे चले गए और हम सब लोग जीडीपी के मारे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना गया, कितना नीचे, कहाँ चाइना है, कहाँ भारत है, हम इसी के चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारी नदियां खत्म हो गई, हमारे हिमालय के ग्लेशियर पिघलने के लिए शुरू हो चुके। नदियां, गंगा, यमुना या तमाम देश की बड़ी नदियां कहीं कगार पे चली गई। हमारी मिट्टी खत्म हो गई और हवा के हालात तो आपको पता है। देश का पार्लियामेंट जहां बैठता है वहां सबसे दम घोटू हवा बन चुकी है, नदी सूख चुकी है। ऐसे में सवाल है कि हमारी भाषा क्या होनी चाहिए। हमारे विकास का जो शब्द है वो अधूरा है। इस देश ने कहा था शब्द समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट बड़ा सोलो है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, इसके नाम से हम विकास का बार बार रट लगाते हैं। सत्य तो यह है, इस देश की भाषा थी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। इट इज वेरी इंक्लूसिव। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, गांव को जोड़कर समृद्धि का नारा लगता था। आज देश के गांव खाली हुए और शहर भरते चले गए। न हम उधर के रहे न इधर के रहे। आज हमारे हालात हैं और जिस मॉडल को हमने अपनाया, वेस्टर्न मॉडल, पश्चिमी देश का विकास का नारा, आज उसी यूरोप में 41 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो चुका। बोलिए किसको माने? वहां तड़प गए हैं लोग। 60% यूरोप सूख गया है। बोलिए किसका नारा लगाना है? आपको सोचना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, और राहुल जी का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं, इस देश को भारत ज्यादा कहो, इंडिया कम, क्योंकि इंडिया में कहीं पश्चिमी झलक है, भारत में इस देश की झलक है। ये समझना होगा। और सत्य ये भी है कि अगर हम ये कल्पना कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बार बार इस देश को दुनिया की चरम में ले जाना चाहते हैं और इस देश को फिर एक बार गुरु का दर्जा देना चाहते हैं। प्रणाम है उनकी इस भावना के लिए। पर सवाल अब ये भी है कि हम आधे अधूरे न रहें। हम इकोलॉजी के साथ, इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी की भी सोचें। हमारी इकोनॉमी, इकोलॉजी इंक्लूसिव होनी चाहिए। मैं बहुत सोचता हूं, मुझे लगता है कि शिक्षा और उद्योग, ये दो घराने ऐसे हो सकते हैं जो इस बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं। वो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के बारे में भी अगर साथ साथ सोचेंगे तो हम जिस इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं वो सिक्योरिटी होगी। और ये देश जहां हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को देव कहा जाता था, जहां भगवान विष्णु समुद्र के तले में बैठते थे और भगवान शंकर हिमालय की चोटी में, पवन सुत हनुमान, ये सब हमारे परिचय थे प्रकृति के प्रति। प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, इस देश ने समझाया और बताया है। शायद इसकी समझ अब एक नए सिरे से बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप ये मान के चलिए, हम किसी भी बड़े पद में पहुंच जाएं और हवा, मिट्टी, पानी अगर हमारे बीच में से चला गया तो हम कहां जाएंगे। और इसी भावना से हमने अपने यहाँ ये जीडीपी की रट के अलावा हमने कहा एक जीईपी भी होनी चाहिए, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। ये 4 पिलर हैं जो हमारे जीवन के पिलर हैं। हवा, मिट्टी, पानी और जंगल, इन 4 का भी ब्यौरा दीजिए जब आप जीडीपी की बात कहते हैं। आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कहते हैं तो इकोलॉजिकल ग्रोथ की बात भी करिए। इकोनॉमी और इकोलॉजी एक साथ चलनी चाहिए। हम में से कौन है जिसे हवा नहीं चाहिए? हम में से कौन है जो एक मिट्टी वाला भोजन नहीं करना चाहता, केमिकल का नहीं करना चाहता? कौन है जिसे जंगल नहीं चाहिए? कौन है जिसे पानी नहीं चाहिए? अगर हम सबको ये चाहिए और इनके अलावा अगर जीवन संभव नहीं है तो हमारी शिक्षा का, हमारे उद्योग का हिस्सा ये भी बन जाएंगे तो करेंगे। इसलिए जीईपी भी शायद हमारा एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और मित्रों, मैं और मेरे जैसे कुछ साथी, मैं आपके बीच में इसलिए कह रहा हूं, तुम आने वाला भविष्य हो।
मैं और मेरे कुछ साथी गेटवे ऑफ इंडिया से, मुंबई से एक साइकिल यात्रा कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि प्रगति फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई हमारे देश की प्रकृति का द्योतक है, और प्रकृति उत्तराखंड हिमालय जो इकोलॉजी है, इनकी एक साइकिल यात्रा हम कर रहे हैं 7 स्टेट से होकर, और सब लोगों के बीच में जाएंगे। मित्रों, ताली से काम नहीं चलेगा, अब ये औपचारिकता बन चुकी है। जुड़िए, ताल पर ताल मिलाइए और उस बात को आगे बढ़ाइए जो इस देश की सबसे बड़ी हमारी अस्मिता है, हमारी प्रकृति। हम दुनिया में प्रकृति के लिए जाने जाते हैं और इसकी समझ बनानी पड़ेगी। हमें आर्थिकी भी चाहिए और प्रकृति भी चाहिए, इकोनॉमी भी चाहिए, इकोलॉजी भी चाहिए, और अब वेस्टर्न वर्ल्ड शायद भारत की तरफ एक नए सिरे से झांकेगा, क्योंकि अगर मूल मंत्र प्रकृति को बचाने का है तो वो इस देश में है। और मित्र, आप आने वाली पीढ़ी हो, आपके हिस्से का हवा, मिट्टी, जंगल, पानी हमने खा दिया, मेरे जैसे उम्र के लोगों ने। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करने आया हूं कि आप प्रकृति को बचाने के लिए भी इतने जोर से जुड़े। ये आपका सवाल है जीवन का। मेरा जीवन मैंने जितना जी लिया उतना आपका बचा है। आप आने वाले समय में इस जीवन के प्रति गंभीर हो और एक साथ जुट करके प्रकृति और प्रभु और प्रगति, इनको एक साथ जोड़ के देखें। प्रभु के साथ प्रकृति और प्रगति जुड़ी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मित्र, यहाँ पे आने का या मुझे एक निमंत्रण जो मिला है उसका कुछ मेरे लिए अर्थ निकलेगा, और मेरा अर्थ का मतलब मेरा नहीं है, वो आप सबका है। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को लेके इस पर गंभीरता का समय है। और ये बार बार जो घंटी बज रही है, मैं बड़ा सचेत हूँ, मैं अपने समय से पहले इसको समाप्त अवश्य करूँगा, लेकिन मैं एक और घंटी बजाना चाहता हूँ जो प्रकृति बजा रही है। हिमालय के होने वाले तमाम तरह के जो डिजास्टर हैं, आपकी नदी जो मूला मथु नदी है वो अगर बहुत गंदी है तो वो भी घंटी बजा रही है। यह तमाम दुनिया में जितने भी प्रकृति के प्रकोप हमारे बीच में हैं वो भी घंटी बज रही है। इसको न सुने, उसको सुने जो सुनाई नहीं दे रही है, कुछ बता रही है। मेरा प्रार्थना है मित्रों और सभी को, शायद सामूहिक रूप से अब प्रकृति को समझने समझाने का है, और वो यात्रा जो हम लोग सबके लिए कर रहे हैं, क्योंकि सारी हवा मैं नहीं पाऊंगा, सारा पानी मैं और मेरे साथी नहीं लेंगे, मिट्टी बचाएंगे तो सबके लिए बचेगी। इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप इस ओर भी चिंता करें। और सत्य तो ये है कि पार्लियामेंट का मतलब पॉलिटिक्स से नहीं होता, जो गवर्नेंस है उससे नहीं होता, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट और गवर्नेंस का स्किल है ये स्कैम भी बन जाता है। अब समझ ये होनी चाहिए कि हम आने वाले समय में प्रकृति को साथ जोड़कर बढ़ें और अपनी समझ प्रकृति को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ाएं। आप सब लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और जिस यात्रा में हम सब लोग निकले हैं उसमें आप कैसे जुड़ाव कर सकते हैं, राहुल जी को हम अवश्य इस बात की सूचना देंगे। आप सबको प्रणाम और धन्यवाद। Thank you very much, Padma Bhushan Dr. Anil Prakash Joshi ji. Thank you very much for your thoughts and your words of wisdom. And now it's time when I request and invite the CEO of JK Enterprises and Director in JK Organization, the special guest of honor of this session, Shri Ananta Singhania ji, to kindly address the gathering. But before I invite him, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri Ananta Singhania ji. Shri Anant Ajaypat Singhania is president of the Indian Merchants Chambers. He is also a fifth-generation industrialist, CEO of Messrs. JK Enterprises. The firm belongs to the illustrious 135-year-old JK organization, which is owned and operated by the Singhania family.
Shri Singhania is a director in JK Organization, Platinum Fashion Apparels Private Limited and Subhash Silk Mills Limited. He is also the managing partner of Golden Fibonacci Property Developers Limited Liability Partnership. Shri Singhania is the current president of the 115-year-old IMC Chamber of Commerce and Industry. After being on the managing committee for several years, Shri Singhania is a commerce graduate from Sydenham College, Mumbai. He also did a 2-year course in computer applications and programming. Shri Singhania has been involved in the activities of educational institutions, organizations, and charitable trusts in the JK organization and elsewhere. He was a trustee of the JK Trust, India's largest private NGO in the animal husbandry field, and a trustee in a few other public charitable trusts in the fields of education and medical facilities. Apart from business, Shri Singhania has been a member of the Executive Committee of the Indo-Italian Chambers of Commerce and the Managing Committee of the century-old IMC, Chamber of Commerce and Industry. He is the co-chairman of FICCI, Maharashtra State Council, and an executive committee member of the China-India Forum. We warmly welcome Shri Anant Singhania. Please put your hands together and welcome with a big round of applause the special guest of honor, Shri Anant Singhania. Thank you. Yeah, it's fine. Thank you. A very good morning, Professor S.P. Singh Bagal, Honorable Minister of State for Law and Justice, Government of India, Dr. Shivan, former Chairman ISRO, Professor Dr. Vishwanath D. Karad, founder and chief patron and president of the MIT World Peace University, dignitaries on the dais and off, faculty, students, ladies and gentlemen. It's an absolute pleasure and honor to have been invited by Dr. Karad to share my thoughts with you today at the 12th Bharatiya Chhatra Sansad at this amazing university campus. Let's give a round of applause to the wonderful cultural performance put up by the students of MIT. We had two wonderful student leaders. I can see them moving ahead, and it's just a reflection of what there is in the audience, the future leaders of tomorrow. This platform was created by the leaders of tomorrow, was conceptualized by Mr. Rahul Karad way back in 2011, which has been instrumental in sensitizing the youth of today to take up democratic leadership. Thousands of selected student leaders eagerly participate in such a unique conclave every year, only because of this sanctity of the thoughts behind such an apolitical platform which talks about strengthening the democracy. The MIT School of Government, started by Mr. Rahul Karad in 2005, happens to be Asia's first school to train and develop future political leaders. It's praiseworthy that the Institute has taken up the mission of ensuring that the educated youth must join active politics. I sincerely hope that this initiative fulfills its objectives and that institutions like the MIT World Peace University continue their dedicated efforts towards nation building. Standing here, addressing you from the Swami Vivekanand Sabha Mandap, named after a distinguished spiritual leader and a social reformer, I recall one of his queries: believe in yourself and the world will be at your feet. I too have a few mantras for the youth who aspire to be a leader. The first step is to work hard. The second is also to work hard. And the third is also to work hard. It always pays. And most important, believe in yourself. You can do it. The way to inspire others is to know what motivates them. What helps is asking, listening, and building trust. Leaders don't choose their followers.
followers choose them. A great leader will take his people along and work towards the development of society and the nation. Leadership plays a key role in sustainable economic growth as it involves providing opportunities for the growth and the progressive development. India is not only the largest democracy, but also houses one of the youngest population in the world. 2/3 of the population is below the age of 35, and India is poised to harness this demographic dividend. The youth is the future of tomorrow and continues to find solutions to every problem that it is poised with. We must focus on our priorities and look about new ways of operating the world. Take the pandemic. The world that we knew over the last couple of decades has dramatically changed over the past 2 years. We have transformed and adapted to the change in a post-pandemic world. One wonders, are we at the end of the pandemic, or is it the calm before the storm? Conversely, one ponders China's stand on the zero COVID policy, where even today, more than 30 cities, millions of citizens are facing severe lockdown, reminiscent of what we faced a year or two back. Even the Ukraine-Russian crisis is another uncertainty that has greatly impacted the world economy and is causing havoc to economies worldwide. We're seeing UK with 15% inflation. It's rising oil prices. Europe is at a standstill with winter approaching, and it's causing a great impact on the supply side inflation. The IMF has projected the world GDP for this year at 3.2%, which will slide to 2.9% next year. While these projections are gloomy, but India is at a different trajectory. India is one of the fastest growing economies of the world. As our speaker said earlier, we must not only measure our growth by way of GDP, but with the ecology as well. However, India is upstage UK to now become the 5th largest economy in the world. It always was the 3rd in terms of the purchasing power parity. And the kind of growth we are going to see as we celebrate 75 years of independence is going to be tectonic. It's going to be mind-blowing. We had $3 trillion. This is going to go 10 times in the next 25 years. We will be $30 trillion by the time India turns 100. Can you imagine what kind of opportunities that will have for the world to look upon India? I feel in what Mr. Rahul Karad said, Modi ji's vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India. I see a Bharat where the world will become dependent on her. We will soon move from Atmanirbhar Bharat to an India where the world will be Bharat par Nirbhar. India's development, rapid growth, technological marvels, brain power, digital revolution is not going unnoticed. The entire world has descended on us to exploit the huge domestic demand and the land of opportunity. The schemes rolled out by the government has enabled the top Fortune 500 companies to set up their base in India. We have the latest iPhone, the technological marvel being produced in India. We just recently heard of semiconductors being manufactured at a very large scale in Gujarat. All of this is India's attraction. The digital revolution of mobile, the internet connectivity in each one's hand, the revolution called 5G is going to change everything. It's going to put India back on the digital curve. Can you imagine the kind of speed that you will get delivered, the kind of content that you will get, the kind of security that the 5G revolution will give you? We've already had 105 unicorns come up. The startup ecosystem is there. You are the youth. You are the future. You are going to be a part of this change, the part of this progress.
Even world over, Indians are at the helm of Fortune 500 companies, be it Google, be it Twitter, IBM, I mean, just to name a few. Not only that, in the political world, and here as I speak to you at the Indian Student Parliament, did you know that there are over 30 leaders, presidents, prime ministers of Indian origin that have served in various countries? Even today, 5 presidents and 2 prime ministers of Indian origin are currently in office around the world. Students, you should aspire to go out there and spread your wings and make a difference. I thank organizers for playing that small video on me. It was very touching. I have been blessed to be born in the Rashtra Singhania JK family, having a heritage of over 135 years of industrial activity, trading, services, and philanthropy. Being a 5th generation family member, I imbibed the value systems that propelled us towards growth. Investing in people, choosing the right technology, and focusing on the growth areas is the key to success. You may not know, but my great-great-grandfather, he started with a very meager way. He used to sell textile, going house to house. From there, we started our pursuit of excellence. We started focusing on one very key factor. That factor was exports. Because we knew in order to be competitive, we needed to be competitive in the international global arena. That taught us 3 things: focus on quality, competitive pricing, and timely delivery. These were the 3 mantras that really helped us as an organization. I must tell you that JK had several firsts. We were the world's first producer of hydrosulfide in soda, the first in India to manufacture TVs, the first to manufacture steel-built radials, and so on and so forth. Today, some of our businesses are world leaders in their respective fields. None of this would have been possible without the inward focus of our core business needs. I will end with something that I saw recently on social media that was really impactful. What is the difference between growth, progress, and success? So the speaker said, if you increase your turnover from 50 crores to 100 crores to 5,000 crores, it's called growth. It's not success. Increasing your materialistic possessions is called growth. But if you add ethics, discipline, and honesty, it's called progress. So growth plus ethics is called progress. Now, what is success? When you take growth plus ethics plus humanity, morality, and spirituality, that is called success. And we have to move to that higher role. So students, go live your dreams. The sky is the limit, and I wish you a successful journey. Thank you. Thank you very much, Sri Anand Singhania ji. Thank you very much for your words of wisdom, and thank you very much for giving the mantra for success to all the participants of 12th Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you very much. Next, now it's time when I invite on stage the noted classical vocalist, the special guest of honor of this session, Madam Kaushiki Chakraborty ji. But before I invite her to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Madam Kaushiki Chakraborty. Srimati Kaushiki Chakraborty is a well-known Indian classical singer. She was a student at the Sangeet Research Academy and a representative of the Patiala Gharana. Her repertoire includes semi-classical thumris and khayals. She began studying Indian classical music at the age of 10 at the Jnana Prakash Ghosh Academy, where her father's guru also taught. She later enrolled in the ITC Sangeet Research Academy and earned her degree there in 2004. Her father also provided her with musical training in Kolkata,
at the Shruti Nandan School of Music. She has developed a specialization in performing khayals and thumri. But since 2002, Vidwan Bal Murli Krishna has also taught her South Indian classical music. Srimati Chakraborty has taken part in numerous important concerts. She occasionally uses modern Indian pop music in her concerts in addition to performing khayals. She began performing at the Dover Lane Music Conference when she was 20 years old and participated every year for the following 5 years. She won the Asia Pacific category of the 2005 BBC Radio 3 Awards for World Music. She also received the Nari Shakti Puraskar in 2020 and also won the 2010 Ustad Bismillah Khan Puraskar for Hindustani vocal music from the Sangeet Natak Academy. We warmly welcome Srimati Kaushiki Chakraborty. Please put your hands together and welcome with a huge round of applause, Madam Kaushiki Chakraborty. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurudeva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Namaskar everyone. Before I even start speaking, I want to thank everyone who made it possible for me to come here and speak to this august gathering of such eminent personalities, such dignitaries present on stage. I thank MIT School, Dr. Karar and Shri Rahul Karar ji for giving me this opportunity. I'm not a speaker, as you can see, and that's why I started my time with something that I've been doing for a long time. So I've been thinking that why am I coming here? What is my relevance of coming here? I'm neither a political personality, I'm not a leader, I'm neither somebody who heads a company or, holds things together. So the only relevance that I have got, only reason that I might be here, because I'm a student. So I should be more on your side and not here. But I speak for you, I speak for a student, I speak for someone who has been trying to learn a traditional form of art and have been trying to serve it with all my honesty, commitment, devotion, and truth. I'm a student of philosophy, but before I get to that, the Bharatiya Chhatra Sansad, I have been told as a child that Chhatra is the one who holds the Chhatra, which means someone who holds the shade on top of the Guru's head. So the concept of leadership is so much about the student, about the legacy, about the tradition going forward and taking it forward. The responsibility lies on your shoulders, the able shoulders and the strong shoulders that the future generation, the students who are sitting here, it is with you. As a student of philosophy, I read this line from the great philosopher Descartes, I think, therefore I am. But for me, it's slightly different. I sing, therefore I am. So let's talk about what music makes me. Because I sing, therefore I am. Now, who am I? I am a very true Indian. I'm a true Indian, and in this platform, starting from this platform, I promise Rahulji, I'm an Indian, but going forward, I'm a Bharatiya. So being the Bharatiya that I am, what did I learn from music that makes me a true Bharatiya? It made me respectful towards my tradition.
The concept of leadership, I think, is best conveyed with the concept of a guru. A guru, the word itself says, the first part of the word says darkness, and the second part of the word means light. So someone who brings you from the darkness of ignorance to the light of knowledge is a guru. And if this is not a leader, then who is? And there's a Sanskrit shlok that I learned as a student of music. Ajnanatimirandhasya jnananjanashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namah. This is what music teaches me. Also, it teaches me to be secular, to be respectful to different caste and creed and religion and different shapes and sizes and colors of God that we worship and we bow our heads. Because in the same discipline of music, I learned Devi Durge Sanatani Mata Palika Sab Bhakatan Ki Devi Durge. Also, the next morning I would learn a different composition, which is Allahu Allah Jale Shan Mola Tero Naam Liye Mere Hove Tasalla. So this was not a part of a secular training system, education system. All these were learned through the discipline of learning music. So, and also, Dr. Anil Joshi ji was talking about environment. I realize how important it is. But as a part of music, I learned a composition, Agh Bhoom Akash Pavan Pani Balihari Teri Meherbani Agh Bhoom Akash Pavan Pani, which talks about the 5 elements of nature and how it is held together with the absolute, with the concept of absolute that we worship. It doesn't have to be a God with 4 heads or 3 hands or sitting or standing. It just has to be a concept of absolute. Now, coming to the concept of absolute, the training of spirituality, the understanding of spirituality in my life happened through music. When I learned Na punnam na papam na sokyam na dukkham na mantro na tirtham na vedah na yagnam aham nirvikalpo nirakar rupam aham bhojanam naiva bhojam na bhokta chidanand rupo shivoham shivoham. So this was my training of spirituality, of the nature of my existence, of the nature of my soul, something that's beyond the gender, the caste, the creed, the religion. Now, coming to a place like this, I also once again understand how powerful music is, because the anthem of Chhatra Sansad is a song. I mean, I don't want to mention every specific song that we hear, for a detergent powder, to a clothing line, to a car. So every song is power. Every tune has its own power, and the power that communicates, that binds us together, that holds us together, that brings us together. A national anthem could have been just a poetry, but we needed a song. Not in this country. Every country needs a song. Every country needs a song that's their national anthem. Every country needed a tune that brings everyone together. Not every one of us have to be a singer, but we have to come together under the tune of that anthem. But it pains me, because I'm in a leadership forum, and I think as a student, as I started my speech with, as a student, I have a few requests, I have a few plea to the future leaders and the existing leaders of our country. This power that music is
when I see that it's an extracurricular activity in the schools, when I still see people calling a tanpura sometimes a sitar, when I hear people calling a sormandal a santur, or not being able to differentiate between a surbahar and a veena, it really pains me. Because in a country where creative art, where culture, where poetry, theatre, literature, music, painting, sculpture, where these things define us, where it says who we are, where it lets us, it kind of allows us to meet ourselves. In this country, music is still an extracurricular activity, and we are still considering, as a part of the government, whether to bring music to be a part and parcel of our primary education system like the Western world. But my question is, like the Western world, we don't have to bring music. Like our own ethos, like our own history, like our own, tradition, we have to continue to make music a part and parcel of everybody's everyday life, not to make them musicians, but to make them more holistically educated human beings that makes a more healthy society. Because we all are talking about the combination of EQ and IQ. I do not know personally, maybe I'm biased, and allow me my bias as a musician. Maybe I'm slightly biased, but I don't know of any other way to bring that balance into our lives, if not bringing creative art into making it a part and parcel of our education system. And I think it is already very, very, very late, but there's never a late when we make a decision and we promise to kind of carry it forward. And as I said, that, I sing, therefore I am. It taught me discipline, it taught me tradition, it taught me perseverance, it taught me the importance of a guru, it taught me the importance of leadership, it taught me that a leader is that person who promises to continue his learning process, a person who continues to grow, and a person who commits to take the society by and large and continue that education, continue that understanding and learning process together and make the I in a bigger and a bigger and a bigger we. So the hashtag for this conference is Future Hamara Hai. Definitely Hamara Hai, but I remember a dialogue from the movie Spider-Man: with great power comes great responsibility. So the responsibility along with the power is yours. And as a student of music, I will wait for this power, for this governance, for politics, to decide, thinking the holistic development of the society, considering how we can make this society. We're talking about how we are a very, very young country. Yes, we are a very young country, but the rate of teenage and youngster depression is also growing as much. And I think creative arts and culture and valuing the tradition, valuing where we come from, will take away that depression and will make us more grateful. And there's no better way towards a happier life if it's not a very grateful life. Thank you so much. Namaskar. मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. Thank you so much. What a beautiful voice. A big round of applause, my friends. Thank you very much, Madam Kaushiki Chakraborty ji. Thank you very much for your words and, of course, the beautiful voice. Thank you. My friends, now it's time in the session when I invite the chief guest of this session, Honorable Minister of State for Law and Justice, Government of India, the chief guest, Professor Sri S.P. Singh Baghel ji. But before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Sri S.P. Singh Baghel ji. Shri Satyapal Singh Baghel, a member of the Bharatiya Janata Party, is presently a Minister of State in the Ministry of Law and Justice in the second run of the Narendra Modi government. He was elected to the 17th Lok Sabha from Agra constituency. He started his career as a sub-inspector in Uttar Pradesh Police and left the service as Senior Intelligence Officer to pursue his career
as Assistant Professor, Military Science in Agra College, Agra. In 1998, 1999 and 2004, Shri Baghel represented the Samajwadi Party 3 times in the Lok Sabha from Jalesar, Uttar Pradesh. In 1998 and 1999, Shri Baghel was a member of committees on subordinate legislation, human resource development and health and family welfare. In 1999 and 2000, he was a member of committees on food, civil supplies and public distribution and an estimates committee. Between 2000 and 2004, he worked in the Ministry of Home Affairs and on committees of public undertaking, external affairs and member attendance in the House. In 2014, he was elected to the upper house of Parliament, the Rajya Sabha. In 2017, Shri Baghel became a member of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh, representing the Bharatiya Janata Party. In 2019, he was elected to the Lok Sabha from Agra constituency, following his clean and prolific track record in the state. We warmly welcome Shri Satyapal Singh Baghel. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, the chief guest of this session, Professor Satyapal Singh Baghel ji. देश के बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय MIT यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिवसीय छात्र संसद के इस समारोह में पधारे इस विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब, जिन्होंने अभी गए हैं लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान में जिनका बड़ा योगदान रहा है अंतरिक्ष अभियानों में, ऐसे हमारे के शिवान साहब, पूर्व चेयरमैन इसरो। भारत के विकास में जिन उद्योगपतियों का बड़ा योगदान रहा है उसमें से एक परिवार अनंत सिंघानिया जी। वाटर हार्वेस्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ग्रीन गैसेस, पानी, जल, जमीन, जंगल, इसके लिए अपना जीवन देने वाले अनिल प्रकाश जोशी जी। भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म, लोक संगीत, लोक नृत्य को अक्षुण्ण रखने वाली और बढ़ाने वाली कौशिकी चक्रवर्ती जी, श्री राहुल कराड़ जी, प्रकाश वी जोशी साहब, शरद चंद्र बराड़े साहब, बसंत राव गाडगिल जी, डॉक्टर RM चिटनिस, वाइस चांसलर साहब, इस विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापकाएं, छात्र छात्राएं, देश भर से आए हुए छात्र संसद में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सारे पत्रकार बंधु। 1983 में प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ साहब ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज 5 राज्यों में कई हजारों छात्रों को शिक्षित और प्रशिक्षित कर रहे हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो प्रोफेसर अच्छे सपनों को लेकर विश्वनाथ कराड़ साहब और महाराष्ट्र से शुरुआत होनी भी चाहिए। ये वीरों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है, संत पैगंबरों की भूमि है, फकीरों की भूमि है। शिक्षा के अग्रदूत आपको पता ही, यहाँ से ही ज्योतिबा फुले साहब,
प्रथम महिला शिक्षक सावित्री फुले साहब, सामाजिक न्याय देने वाले साहू जी महाराज और आरक्षण देने वाले, औरंगजेब के 25 साल दक्षिण में जाया करने वाले शिवाजी साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राज्य, जिन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया, जो डायनामाइट के फार्मूले से भी ज़्यादा मजबूत है। अपने ऐसे पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने में MIT का बड़ा योगदान है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। 3 दिन आपकी ये छात्र संसद चलेगी। विभिन्न विषयों पर चर्चा परिचर्चा होगी। उसमें आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चाहे 0 आवर हो, 377 में हो, शॉर्ट नोटिस हो, एडजमेंट मोशन हो, कॉलिंग अटेंशन हो, नो कॉन्फिडेंस हो, कोरम पर बात होगी, प्राइवेट मेंबर बिल हो, आप इस पर चर्चा जरूर करेंगे और भारत की संसद को चलने वाली नियमों को जानेंगे। इस 3 दिन के इस छात्र संसद के इस वैचारिक मंथन में जरूर कोई ना कोई अमृत निकलेगा जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, कार्यपालिका को मजबूत करेगा, विधायकों को मजबूत करेगा, न्यायपालिका को मजबूत करेगा और मीडिया को मजबूत करेगा। हमारी डेमोक्रेसी इन्हीं 4 खम्भों पर टिकी हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि MIT केवल IAS, IPS, IFS, IRS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट ही नहीं बनाती है, बल्कि 12वीं छात्र संसद करके ये छात्रों में नेतृत्व की भावना भी पैदा करती है और भविष्य की लीडरशिप भी पैदा करती है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। जो बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, कुछ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी आएंगे, अवार्ड भी पाएंगे। मुझे लगता है जीतना इतना जरूरी नहीं है जितना प्रतिभाग करना जरूरी होता है। जो जीतेंगे अग्रिम रूप से, चूंकि ये इनॉग्रेशन सेशन है, मैं तीसरे दिन आता तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आता, उनको एडवांस में बधाई देना चाहूँगा। और इस अवार्ड का मतलब केवल एक शॉल, दुपट्टा, श्रीफल, ट्रॉफी नहीं होती है। ये जीवन में परिवर्तन लाती है, ये कैटलिस्ट का काम करती है, ये उत्प्रेरक का काम करती है, ये प्रेरणा देती है। जब भी ऐसी किसी छात्र संसद में जाता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि 9 साल की उम्र में एक अंताक्षरी प्रतियोगिता में मेरे अध्यापक ने मुझे मानस के लगभग हर अक्षर पर कई चौपाइयाँ रटाईं। मैं अपना ब्लॉक जीता, तहसील जीता, जिला जीता और फर्स्ट प्राइज पाया। और उस समय गरीब भारत में प्रथम आने पर मुझे रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी। सच मानो, उस साबुन की छोटी सी टिक्की को लेकर के जब मैं अपने गांव के कुएं पर जाके नहाया, मैं उसकी खुशबू से आज तक महक रहा हूं। मैं उसकी खुशबू से इसलिए महक रहा हूं कि वो इनाम के तौर पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी टिक्की ने 9 साल की उम्र में मेरे पैरों की कपकपाहट को दूर किया, मेरे मंच के फोबिया को दूर किया और मेरे माइक के डर को दूर किया। इसलिए लाल किले से भाषण दूं या वाइस चांसलर्स के बीच में बात करूं या माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच में अपनी बात कहूं या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार के बीच में अपनी बात कहूं, उस साबुन की इनाम की टिक्की की वजह से कभी मेरे पैरों में कपकपाहट नहीं होती है। यह उस इनाम का कमाल है। अध्यापक, यहाँ की फैकल्टीज की भी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। अध्यापक राष्ट्र की संपत्ति के चतुर माली होते हैं।
संस्कारों की जड़ों को अपने श्रम से सींचकर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि 1983 से लेकर आज तक 40 साल में निश्चित तौर से इस विश्वविद्यालय से महाप्राण शक्तियां बनी होंगी जो देश के काम आएंगी, डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगी। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ने का तरीका क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, छात्र संसद में भाग ले रहे हो, पॉलिटिकल वायरस अगर आपके एक्टिव हो गए तो कभी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भी पहुंच जाएंगे। ये राजनीति वो है, सत्ता वो है जो ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। मायावती जी एक बार 6 महीने सीएम रही, एक बार दोबारा 6 महीने रही, एक बार 1.5 साल रही। मुलायम सिंह 1977 से 80 के बीच में केवल 27 महीने में 2 प्रधानमंत्री मोरारजी भाई और चरण सिंह साहब रहे। 89 से 91 में वीपी सिंह साहब और चंद्रशेखर जी 16 महीने। 96 के 16 महीने में देवेगौड़ा और गुजराल साहब। एक बार अटल जी 13 दिन के लिए और एक बार 13 महीने के लिए, फिर एक बार 5 साल के लिए। लेकिन ये जो नीली बत्ती होती है ये 35 साल तक के आसपास, 30 से 35 साल के बीच तक रहती है, और ये लाल बत्ती बड़ी बेवफा है, ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। और अब तो प्रधानमंत्री ने वैसे भी आदेश दे करके हम लोगों से कहा और हम लोगों ने माना है कि अब कोई लाल बत्ती नहीं लगाता है। तो आगे बढ़ने का तरीका क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब इसको ऐसे भी कह सकते थे कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। उन्होंने ये क्रम क्यों रखा? जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक संगठित हो ही नहीं सकता, और जब तक संगठित नहीं होगा संघर्ष के रास्ते पर नहीं चलेगा। इस विश्वविद्यालय के बच्चों के अभिभावकों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने अपनी प्राथमिकता में अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा को रखा। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पठाती, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माएँ अपने बच्चों की बैरी हैं, शत्रु हैं, और पिता बैरी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। ऐसे बच्चों की वही हालत होती है जैसे हंस की सभा में बगलों की होती है, ऐसे ही निरक्षर लोगों की पढ़े लिखे लोगों में स्थिति होती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी प्राथमिकता में संपत्ति बहुत ज़्यादा खरीदने की जगह उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। आपके बैनर पर पीछे में देख रहा था, लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, लीडरशिप और गवर्नेंस। ये आपका मोटो है। परिभाषा भी किसी ने अब्राहम लिंकन की कही थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का राज, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अमेरिका कहता है कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम कहते हैं हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। मैं अमेरिका की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। पता नहीं उनके यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का कंसेप्ट है या नहीं। हमारे यहाँ है। द्वापर को गुजरे हुए 5400 साल हो गया है, तो सोचिए कि त्रेता को कितने लाख साल हो गए होंगे। हम ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि त्रेता में भगवान राम का जब राज्य था तब मुकम्मल डेमोक्रेसी थी। अंतिम अनुसूचित जाति का धोबी व्यक्ति वाशरमैन राजा की रानी के खिलाफ विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा उठाते हुए एक कमेंट करता है, और राजा उसको स्वीकार करता है और अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा करवाता है, जब अमेरिका अस्तित्व में भी नहीं था। वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आल्सो। ये बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, राजतंत्र आया है। आप लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं, हमने तो विश्व को लीडरशिप दी है।
ऐसे ही एक धर्म संसद में विवेकानंद जी ने बहनों और भाइयों ही कहा था, उसमें 3 मिनट तक ताली बजी थी, क्योंकि वो लेडीज एंड जेंटलमैन वाली कल्चर वाले लोगों ने पहली बार बहनों और भाइयों सुना था। ऐसी हमारी लीडरशिप है। और गवर्नेंस, जो आप तीसरा शब्द कह रहे हैं, अभी भी दुनिया का सबसे अच्छा राज्य राम राज्य कहलाता है, जो भारत में हुआ। इससे अच्छी गवर्नेंस क्या हो सकती है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, जिसमें किसी भी प्रकार का कष्ट जनता को नहीं होता था और भेड़ और शेर एक घाट पे पानी पीते थे। ऐसी हमारी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस वाला हमारा देश है। मैंने आपके डेमोक्रेसी पे बोला कि ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट पे मत जाओ। मैं उन तमाम लोकतांत्रिक देशों से पूछ रहा हूं, हमारे यहाँ लोकसभा है, फिर राज्यसभा है, फिर विधानसभा है, फेडरल सिस्टम है, फिर विधान परिषद है, तो हमारे यहाँ नगर पंचायत है। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, शक्ति के विकेंद्रण करने के लिए, डिसेंट्रलाइज करने के लिए लोग, हमारी नगर पंचायत है, फिर नगर पालिका परिषद है, फिर नगर निगम है, फिर प्रधान है, सरपंच है, बीडीसी है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत का अध्यक्ष है। अभी भी हमारे कुछ लोगों को लगा कि डेमोक्रेसी मुकम्मल नहीं हुई है, तो छात्र संघ है, तो ब्राह्मण महासभा है, तो क्षत्रिय महासभा है, तो धनगर महासभा है, तो टीचर्स की एसोसिएशन है, तो छात्रों की है, तो नॉन टीचिंग की भी है, तो क्षेत्र बजाजा कमेटी है, तो आईएमए है, तो बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन है, तो टिम्बर मार्चेंट की एक अलग एसोसिएशन है, तो सर्राफे वालों की अलग है। ऐसा डेमोक्रेटिक देश दुनिया में कहीं मिलेगा? इतना लोकतंत्र हमारे यहां मजबूत है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र को और मजबूत किया है, महिला सशक्तिकरण को। कालाहांडी वाला राज्य उड़ीसा, जहां भूखमरी से कभी कांग्रेस के जमाने में लोग मरते थे, उड़ीसा पिछड़ा राज्य, उसमें सबसे पिछड़े आदिवासी और आदिवासियों में सबसे पिछड़ी महिला, और अंतिम पायदान पर खड़ी हुई एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बना करके राजनीतिक अंत्योदय करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मान्यताएं बदली हैं, डेमोक्रेसी की भी मान्यताएं बदली हैं और पद्म पुरस्कारों की भी बदली हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, महिला हर जात की पिछड़ी होती है और आदिवासी की तो बहुत पिछड़ी होती है। पद्म पुरस्कारों की मान्यताएं बदली हैं। पहले लोग सोचते थे कि जो बर्बरी का पर्स लेके चलते हैं, एलबी का पर्स रखते हैं, राडो की घड़ी पहनते हैं, रेबन का चश्मा लगाते हैं, ऋतु बेरी के कपड़े पहनते हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, यू नो करके फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, पद्म पुरस्कार उन्हीं के हिस्से में आएंगे। यह नरेंद्र मोदी ने मान्यता बदल दी है। अब पद्म पुरस्कार भारत में वो लोग भी पाएंगे जिनके पास राष्ट्रपति भवन जाने के लिए एक जोड़ी चप्पल नहीं हुआ करती थी। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं अच्छे नेतृत्व को खतरा है, लेकिन मैं जब भी मेरिटोरियस बच्चों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पिछले 24 साल से जाता हूं तो धीरे से कान में पूछता हूं, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, साइंटिस्ट, सीए। एक बच्चे ने आज तक नहीं कहा कि मैं एमपी और एमएलए बनना चाहता हूं, मैं सीएम और पीएम बनना चाहता हूं। आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं कहा। और बीच के कालखंड में किसी ने यह भी नहीं कहा था कि वकील बनना चाहता हूं। शुरू के कालखंड में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, सरदार पटेल बैरिस्टर थे। बीच में जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता था वो लॉ में लेता था। लेकिन मुझे आज खुशी है कि इस पूना में ही इतने अच्छे लॉ कॉलेज हैं
कि आज चौथी बच्ची कहती है मैं एडवोकेट बनूंगी। ये भी जुडिशरी को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक स्तंभ यहां से मजबूत हो रहा है। शायद इस 3 दिन की छात्र संसद में किसी बच्चे में राजनीति के प्रति जिज्ञासा पैदा हो, तो मुझे लगता है कि अगर एक भी बच्चे में, पढ़े लिखे बच्चे में राजनीति के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई तो अच्छा नेतृत्व मिलेगा, जो आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी, ये भी कहना चाहूँगा, छात्र संसद से आप डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, लीडरशिप को निकालना चाहते हैं, तो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि बहुत ख्याल रखते हो परिंदे का दाना पानी का, इतने ही अच्छे हो तो परिंदा खोल क्यों नहीं देते, पिंजरा खोल क्यों नहीं देते। अगर आप वास्तव में लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं तो अपने विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव करवा दो, और छात्र संघ के चुनाव में जब इस कैंपस में जिंदाबाद मुर्दाबाद और विदेश नीति पे, राजनीति पे, आंतरिक नीति पे, जल नीति पर, डिफेंस नीति पर भाषण देके जब बच्चे चुनाव जीतेंगे तो देश की संसद को अच्छा नेतृत्व मिलेगा। तो अच्छे नेतृत्व की कमी के पीछे ये भी है कि विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में आजकल स्टूडेंट यूनियन के चुनाव बंद हो गए। मिस्टर चतुर्वेदी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने लॉ साथ में की है, मैंने पुलिस में रहते हुए की थी और आप कर रहे थे, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, मैंने ही ठीक कराई थी। ये छात्र, वो हुकुम सिंह टीचर थे, मेरे ख्याल से मुस्लिम लॉ पढ़ाते थे, रोक देते वो आपको। आजकल आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो मेरी वजह से पढ़ा रहे हैं, वरना आप पढ़ ही नहीं पाते। ऐसा मेरे को याद आ रहा है, मेरी मेमोरी भगवान ने ऐसे दी है। ये छात्र राजनीति का जलजला है। वो एडमिशन कराता है, वो एनसीसी दिलाता है, वो एनएसएस दिलाता है, वो सब्जेक्ट दिलाता है, वो स्कॉलरशिप दिलाता है, वो मार्कशीट को ठीक कराता है, वो टाइम पे डिग्री दिलाता है। इसलिए वो अच्छा नेता बन के उभर के आता है। कई बार घंटियां बज रही हैं, मैंने तो काफ़ी कुछ आपसे बात करने का मन बनाया था। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि राजनीति के मायने बदल रहे हैं। मैं जो अपने 6 कार्यकाल जीता हूँ, बड़ी छोटे से काम से जीता हूँ। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयुष्मान का कार्ड बनवाना अथवा आधार कार्ड को ठीक कराना, और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन एजुकल टू एमपी हो जाता था। अब ये चलेगा नहीं। जब ये बच्चे क्वालिटी एजुकेशन लेके जाएंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग पे पूछेंगे नेता से, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे, ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे, ग्रीन गैसेस के बारे में बात करेंगे, रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत की भूमिका के ऊपर आपसे पूछेंगे। इसलिए राजनीति में आना होगा तो अच्छी प्रकार की एजुकेशन भी आपको लेनी पड़ेगी। हम विश्व गुरु थे, नहीं हैं, बनेंगे जरूर। ऐसे ही विश्वविद्यालयों से विश्व गुरु हम बनेंगे। मैं जब आ रहा था यहाँ तो जो आपकी फैकल्टी के बैठे थे तो उन्होंने कहा पूना को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कह रहे हैं। आपको ये बड़ा अच्छा लगता होगा कि आप पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं। मुझे ये गाली लगती है। नालंदा का देश, विक्रमशिला का देश, तक्षशिला का देश। बच्चों, जिस साल नालंदा विश्वविद्यालय जो सैकड़ों साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नक्षत्र शास्त्र पढ़ा रहा था देश को, और जिस साल बहुत साल पढ़ाने के बाद बख्तियार खिलजी जिस साल जला रहा था नालंदा को, उसी साल जिसको आप ऑक्सफोर्ड कह रहे हो, और गोरे लोग फावड़ा लेकर ऑक्सफोर्ड की नींव को खोद रहे थे। इतने साल वो हमसे पीछे। हम विश्वगुरु थे। जेल वेयर ने टेलीविजन बाद में बनाया है। हमारे यहां द्वापर में था, युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर में संजय टेलीविजन देख करके बता रहे थे। बुलेट प्रूफ जैकेट अभी भी हम सैनिकों को नहीं दे पा रहे हैं, कर्ण के पास थी। फायर प्रूफ जैकेट अभी भी सारे फायरमैन को नहीं दे पा रहे हैं। होलिका पे थी, प्रहलाद को जलाना चाहती थी, खुद जल गई क्योंकि जैकेट प्रहलाद के पास पहुंच गई, होलिका जल गई। मार्कोनी ने वायरलेस बहुत बाद में बनाया है। कंस जब अपनी प्यारी बहन को मेरी लोकसभा में मथुरा, बटेश्वर से लेके मथुरा वाया आगरा जा रहा था, आकाशवाणी हुई थी कि तुम जिसको लेके जा रहे हो उसका पुत्र तुम्हें मारेगा। हमारे पास आकाशवाणी और एफएम आज से 5000 साल पहले थी।
इंटर बैलिस्टिक मिसाइल 7 बना रहे हो, हमारे पास अग्निबाण थे, और ये अंग्रेज लोग अभी किडनी ट्रांसप्लांट करके, लीवर ट्रांसप्लांट करके अपने को बहुत बड़ा चिकित्सक मानते हैं। हमारे यहाँ गणेश जी की सर्जरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्जरी का उदाहरण है। और जो गणेश जी हैं, ये गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू या जेम्स हेडली चेज या आर्थर कॉनन डायल राइटर के पात्र नहीं है, वो हमेशा हैं। और महाराष्ट्र से ज़्यादा गणेश जी को कौन जानता होगा। ये शिवाजी सामंत की भी उपन्यास के पात्र नहीं है, ये थे, ये हैं और ये रहेंगे। इसलिए हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी भी हुए हैं कौरव परिवार में, हमारे यहाँ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भी हुए हैं, हमारे यहाँ पिता की जांग से मानधाता का जन्म हुआ है। इसलिए चिकित्सा में भी हम विश्व गुरु थे नहीं है, लेकिन बनेंगे जरूर। मैं बस ये कह के कि अगली घंटी बजे, आपको क्रेज हो या ना हो राजनीति का, लेकिन मैं आज एक बात कह के अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान के हर फील्ड का हेड एमपी बनना चाहता है। मैं टेल का नाम नहीं लूंगा, मैं आईएएस बनना चाहता था, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी टीएन चतुर्वेदी, होम सेक्रेटरी आरके सिंह और शेषन साहब एमपी बनना चाहते थे, तो मैंने आईएएस की किताबों में आग लगा दी। फिर आईपीएस बनना चाहता था तो निखिल कुमार डीजी बीएसएफ, ब्रजलाल साहब, राम आश्रय, श्याम लाल और तुम्हारे मुंबई के सत्यपाल सिंह कमिश्नर साहब जब एमपी बने तो वो भी आइडिया छोड़ दिया। फिर आईएफएस बनना चाहता तो मणिशंकर, मीरा कुमार, नटवर सिंह और जयशंकर जी जो विदेश सचिव थे वो आईएफएस थे, वो आजकल एमपी बने हैं। फौज का जनरल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वीके सिंह साहब एमपी बने हैं, तो फौज में जाना छोड़ दिया। वकील बनना था, लॉ की तुम्हारे साथ, लेकिन जब मैंने देखा कि जेठमलानी साहब, कपिल सिब्बल साहब, रविशंकर जी, सलमान खुर्शीद साहब भी वकील बन रहे हैं, तो फिर वो भी आइडिया ड्रॉप किया। क्रिकेट का बल्ला थामा, लेकिन जब क्रिकेट के भगवान को एमपी बनना देखा, फिल्मों में जाने की पूना आना चाहता था, लेकिन जब अमिताभ बच्चन को, राजेश खन्ना को, दिलीप कुमार को, विनोद खन्ना को, गोविंदा को, राज बब्बर को भी एमपी बनते हुए देखा चाहा, फिर सोचा पैसा कमाएंगे। लेकिन सिंघानिया जी के ही खानदान के लोग, बिरला जी, के बिरला साहब, अनिल अंबानी साहब, विजय माल्या साहब, अमर सिंह साहब जब एमपी बने तो मैंने वो भी पैसा कमाना भी छोड़ दिया। इसलिए देश की हर विधा का, इसरो के बैठे हैं, लेकिन एटॉमिक एनर्जी के राजा रमन्ना साहब हमारे यहाँ एमपी बन करके आए थे। मैं अभी बहुत से फील्ड छोड़ रहा हूँ, स्वामीनाथन साहब और कस्तूरी रंजन साहब। इसलिए बच्चों, जब ये सारे लोग 35 साल गुजारने के बाद राजनीति में आए हैं, मैं सीधे सीधे पीली चिट्ठी लेकर के आपके लिए आया हूं कि फिल्मों में जाने से पहले, क्रिकेट में जाने से पहले, उद्योगपति बनने से पहले, फूलन देवी की तरह डकैत बनने से पहले, अथवा बड़ा वकील बनने से पहले, या सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रंगनाथ मिश्रा और गोगोई बनने से पहले सीधे सीधे पॉलिटिक्स में आ जाओ। ये मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूँ, और यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। बंगाल और पंजाब इसके दो मजबूत कंधे हैं, कश्मीर इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी जटाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी दो जंघाएं हैं, विंध्याचल इसकी कमर है और नर्मदा इसकी गर्दनी है, कन्याकुमारी इसके पैर हैं, कंकर इसका शंकर है, सूरज और चांद इसकी आरती उतारते हैं। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे इसके लिए और हम मरेंगे इसके लिए। राहुल जी की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूँगा कि आप इंडिया को भारत चाहते हैं, मैं भी इससे अपने को संबद्ध करता हूँ, मैं संबद्ध करता हूँ, लेकिन लोक भाषा पर ध्यान दीजिए, लोक भूषा पर ध्यान दीजिए, लोक भोजन पर ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी रुतबे की भाषा है, माध्यम की भाषा है, नौकरी की भाषा है। कृपया घर में मत आने दो। घर में मराठी बोलो, कन्नड़ बोलो, तेलुगु बोलो, हिंदी बोलो, तमिल बोलिएगा, भोजपुरी बोलिएगा। आप जिस भारत की बात कर रहे हैं उसको खतरा कितना है? कुत्ते के साथ अंग्रेजी बोली जा रही है, लूसी गो, लूसी सेट। एलीट क्लास की दादियां और नानियां अपने न्यू बॉर्न बच्चे के साथ अंग्रेजी में बात करती हैं, और आप भारत की बात कर रहे हो। इसलिए पिछले 63 साल से भारत सरकार चुनता था और इंडिया सरकार चलाता था। ये 8 साल से भारत सरकार चुनता है और भारत ही सरकार चलाता है। इसलिए 12 का बीमा, 30 का बीमा, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण आवास, शहरी आवास, ये सब हम लोग दे रहे हैं।
आपके भारत के लिए एक बात कह दूं, खूबसूरत नर्स से बदसूरत माँ हमेशा अच्छी होती है। इसलिए हमारी हिंदी, हमारी मराठी, हमारी कन्नड़, हमारी तमिल, हमारी तेलुगु, ये हमारी माँ हैं, भले ये थोड़ी सी खूबसूरत ना हो। तो भारत जब मुकम्मल करना चाह रहे हो, इसलिए भी करना है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म को बहुत सारे खतरे हो गए हैं। 1191 में तराई के युद्ध में हम जीत गए, 1192 में हार गए, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक गुलाम के गुलाम गोरी ने हमको गुलाम किया, फिर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने, फिर उसकी लड़की रजिया ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, फिर औरंगजेब को भी इस महाराष्ट्र को झेलना पड़ा। इसलिए सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा और भारत को, जम्बू द्वीप को खतरा पहुंचा है। फिर लॉर्ड मैकाले आ गया, अंग्रेजी आ गई, तो ये खतरे हैं। इसलिए मैं जो चाहता हूं बच्चों से, वो शेर के साथ समाप्त करता हूं, जो बीसी साहब ने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होना चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर यह आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Honorable Minister, sir. Thank you very much for your words of wisdom. It was really a great joy and to hearing your views. Thank you very much for your thoughts. And my friends, it's now time when I invite the founder and chief patron of MITES MIT Pune and president of MIT World Peace University, and the one who's behind the creation of philosopher Sri Ganesh for our World Peace Prayer Hall and World Peace Prayer Library, World Peace Dome. And before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film on philosopher Sri Ganesh for our World Peace Prayer Hall and World Peace Library. I appeal to the Vice President and Honorable Chief Minister to recognize this World Peace Dome as a structure of national and global importance and support to promote it in such a way that it evolves as one of the prominent tourism destinations of the world. 21वीं शताब्दी में मेरी भारत माता विश्व गुरु बनने की काबिलियत रखता है। It will become a विश्व गुरु in the 21st century. उसका छोटा सा उदाहरण, छोटा सा सिंबल यहाँ बन गया है, ऐसा मेरा मानना है। Please put your hands together and welcome with a big round of applause the UNESCO chair holder, revered Professor Dr. Vishwanath Karat, sir. It's okay. Honorable Chief Guest of today's function, Professor S.P. Singh Sahab, सिंघानिया जी, हमारी छोटी बहन श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती, Mr. Joshi, and all others sitting on the dais,
Friends, I can only say it truly fills my heart with a sense of pride and pleasure when I stand before you on this very unique occasion of the 12th Indian Students' Parliament और भारतीय छात्र संसद जिसे कहा जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सारे भारत से आए हुए very learned students from various universities, they have come here with all the tremendous passion and fire in their belly. मैंने जो सुना कि भाई बोलना ठीक है, भाषा अलग अलग होती है, लेकिन unless there is a fire and the passion in the belly, it has no meaning. But I could see that the words of wisdom and the words of wonderful understanding of the union of science and religion / spirituality जो इस संस्था का मकसद है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि लेकिन those students who have come from all over India and even those students who have joined this institution newly, if they can appreciate and understand the very essence and philosophy behind the mission which this institution has taken up. And when you see this Mr. Rahul and his team organizing such events, भारतीय अस्मिता की बात हो, इंडियन स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की बात हो, विमेन्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात हो, इसके पीछे जो मकसद है, that is only I will appeal to you. I will not speak very elaborately, but a mention was made just now while making my own introduction very briefly, and it was shown to you that philosopher Sant Jnaneshwara and philosopher Sant Tukaram, the World Peace Dome, and the biggest in the whole world by structure. But Dr. Mashwarkar has said that it's not the structure that is important. It's the message and it's the concept behind. विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लेबोरेटरी की बात है। वो डोम नहीं सिर्फ जो किसने बनाया नहीं, वो बन गया है, जिसको आर्किटेक्ट नहीं, प्लानर नहीं, डिजाइनर नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई नहीं, कैसे बना? I am not an architect myself. I am not trying to pose you something, but I am trying to make a statement, very positive statement. In the known human history, ये मेरा शब्द नहीं, ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट रहे वेंकैया नायडू साहब, जिन्होंने वर्णन किया, this will be another wonder of the world. It is his appreciation. But what for? The basic issue is it reveals and expresses the very principles and laws of nature and life. अभी nature की बात हो गई, to be in tune with the nature, ऐसी भी बात है। तभी समझने की कोशिश करो कि संस्था के अंदर आते ही वो सामने संत ज्ञानेश्वर का फोटो रखा है, मूर्ति रखी है। क्या मकसद भाई? ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इट्स अ वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टैच्यू which was kept at the very doorstep of the institution? Let me only, friends, very briefly tell you that I am a student of engineering. As such, I never wanted to be an engineer myself, but I became an engineer, became a teacher, a professor, started MIT, and today we have started the MIT World Peace University based on the understanding, appropriate understanding of the role of science and spirituality. ये क्या है भाई? स्पिरिचुअलिटी क्या है, साइंस क्या है, उसकी खोज। और इसलिए जहाँ भी देखोगे लिखा है हमेशा फिलोसोफर संत ज्ञानेश्वरा टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये जर्नी है, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी टू अंडरस्टैंड द एसेंस बिहाइंड दिस, what science stands for
and what spirituality stands for. ये जो अध्यात्म शास्त्र है, जिसके बारे में कोई चिंतन है बड़ा लंबा, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा. But I want to tell you, friends, that if you try to really go stand before the statues in the dome, which is for the first time again it has happened, जरा अंदर जाके गौर से देखो. Go in, stand before the statues of the Jesus Christ, Tathagat Gautam Buddha, Aurobindo. You take the name, the Einstein, Penrose, you take the names who have been addressing the world today. I think Karthikeyan Sahib, you are sitting here, I can see you, a very great man. You are going to listen to them possibly tomorrow or today. Friends, remember, the time has come, and I have a satisfaction that after about 30-40 years of a teacher being for engineering, but basically a Vaishnavite, that has helped me to understand all these mechanisms. The living mechanism, the very body, the smallest of the small living cell has a body and has a brain, and it has the soul and the mind. The present science has studied only the body and the brain, but we have forgotten the soul and the mind. And the question is today before the world, what is the chemistry of mind? ये मन की बात नहीं, दिल की बात है, दोनों भी है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई कि it is the duty of you people all to present this vision, present this mechanism, and then understand this coronavirus. Understand the COVID-19, which has made the whole world to sit behind the doors. All the Security Council members, possibly Karthikeyan Sahib will tell us the details. All the Security Council members, like America, the Britain, China, Russia, all the great nations, the powerful nations as they call themselves. Why they were sitting behind the doors? Hiding behind, remember. All the temples, the masjids, the mosques, everything was closed. What was that which made us close down? And now, possibly, friends, remember, it is the duty of you as a man of science and understanding what spiritual comfort stands for. Sant Tukaram has said, Anu Renu Thokoda or Thukasha Akasha Evda. One word. Shanti Parte Nahi Sukha. एर अवघेची दुःख म्हणून शांती राहा उतरा पहिले तेरा. छोटे शब्द है, लेकिन they have a basis behind. They have a very scientific revelation. And I'll just tell you lastly, this very statue which I referred to, philosopher Sant Jnaneshwara, at the age of 16, only 16 साल की उम्र है भाई. समझ तो लो, उम्र है 16 साल की, 730 साल के पहले की बात है. How many years? 730 years back. This boy from your country, Mother India, is revealing to the whole world and telling them to understand the very mechanism of life. And he says, Om Namo Jyadya Veda Pratipadya Jaya Jaya Swasvedya Atmarupa. Self-consciousness. Self क्या है? आत्म स्वरूप जानने की कोशिश करो, इतना शब्द है. लेकिन there are many scientific revelations. He says rising of the sun in the east and going to the west is the illusion before Galileo. समझने की कोशिश पढ़ो तो सही, इसको अंधश्रद्धा मत कहो. आप साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, मैनेजमेंट लोग होंगे, मेडिकल के होंगे, ये पढ़ने की कोशिश करो भाई. मेरी प्रार्थना है आपको. ये यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमने ये पेनरोज और आइंस्टाइन के कहने की बात है, ओम टेंडिंग टू ई इक्वल टू MC स्क्वायर. जगह जगह पर ये इक्वेशन लिखा है मैंने. एंड आई वुड लाइक टू प्रेजेंट टू यू बिफोर, बिकॉज आई एम पुटिंग दिस बैनर्स एंड पोस्टर्स विच हैव अ मीनिंग बिहाइंड. ओके, मजे की बात नहीं. इफ यू फील लाइक आस्किंग क्वेश्चंस, आस्क इट. Meet your teachers, discuss with them why you have written this like this. Is it true? And beautifully, we have been very fortunate friends. Then we have been talking about the Indian Students' Parliament. आप लोग हैं
कि जो पहले समझने की कोशिश करो, धर्म ही नहीं, राष्ट्र धर्म। धर्म तो होता है भाई, हिंदुत्व यानी भारतीय एकात्मता है, वो भारतीय एकात्मता है हिंदुत्व। किसी धर्म की बात नहीं होती है, ये सारे धर्मों का राज दिया है। रिलीजन इज नथिंग बट टू परफॉर्म योर ड्यूटी। ये विवेकानंद का शब्द है 1893 का। और जहां विवेकानंद ने दुनिया को, व्हेन वी वर अंडर द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश, 1893 के बाद 1897 में कहा है, and he had made a prophecy. Vivekananda tell the world that time to remember that my mother India, which is on the clutches of the British, is going to get free from the clutches after 50 years from today. 1897 add karo 50 साल, it comes to 1947. विजन बोला जाता है, इनसाइड बोला जाता है, ये दृष्टा पुरुष बोला जाता है, दिखाई देता है भाई भविष्यवाणी। और उसी तरह से ये हुआ और भाषण हुआ है कि नाउ इंडिया हैज अ रोल टू प्ले। क्या रोल है मेरा? टू शो द पाथवे ऑफ हार्मनी एंड पीस टू मैनकाइंड। दुनिया को सुख, समाधान और शांति का मार्ग दिखाने का दायित्व मेरे भारत माता का। माई मदर इंडिया, गर्व नहीं, स्वाभिमान। स्वत्व, स्वाभिमान और स्वधर्म, तीन शब्द है। स्वधर्म है, स्वाभिमान है और स्वत्व है। तीनों जगह के रखो भाई। समझ तो लो आप किसकी संतान हो, क्या कुल है आपका। और कुलीन कन्या और कुलीन सुपुत्रों का देश है ये सारा। अभी वक्त आ गया है दुनिया के सामने दिखाने का, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना द वर्ल्ड हैज रियलाइज, वो जो अल्टीमेट है ना, जिसे ईश्वर कहा जाता है, जिसे गॉड भी कहा जाता है। ईश्वर का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर का मतलब शक्ति है भाई, शक्ति, एनर्जी है। इट्स इनविजिबल। ये तो साइंटिस्ट है ना, अपन समझ सकते हैं। तो इसकी दिशा में जाने का प्रयास है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे वाइस चांसलर चिटनीस मिलिंद पांडे and especially Rahul and his team, who has been trying to promote this cause and organizing this National Students' Parliament, has a deep-rooted passion and fire to show the pathway. ये लीडरशिप बनाना, नेता होना, राजनीति की बात करना, लेकिन राजनीति का सही मकसद क्या है? ये समाज का कल्याण, समाज का हित, विश्व शांति की बात, विश्व कल्याण की बात, ये भारत का दायित्व है। वो रास्ता दिखाने के लिए ये प्रयास है। मैं आपको अभिवादन करता हूँ सबको। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. And my friends, we have just gathered here. We heard few sessions and we went back. It shouldn't happen that way. There has to be something concrete that we take with us from this movement of 12th Bharatiya Chhatra Sansad. And hence, it is now time that we abide ourselves with an oath, for which I would like to request everyone on the dais, off the dais, to please rise in their seats. Please put their right hand forward as Mr. Dhirendra Singh administers an oath to all of us. I would like to request you to please listen to his words carefully and then follow him. हम सभी भारतीय छात्र संसद के प्रतिभागी ये प्रण करते हैं कि हम भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहकर अपनी भारतीयता को दृढ़ करेंगे। हम हमारी बुद्धि, भाषा, आचार और विचारों से जागृत विश्व नागरिक बनेंगे। हम व्यक्तिगत उद्देश्यों से ऊपर उठकर
सही मायने में भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बदलाव के संवाहक बनेंगे। राष्ट्र निर्माण, बहुमुखी विकास व देश सेवा के प्रति समर्पित होकर इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे और राजनीति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much. I request everyone to be seated, please. Everyone in the audience, please be seated. I request everyone to please pay attention to an important announcement. My friends, after this session, we will have a lunch break. Please note, please be seated. These important announcements are for you. Please ensure that you carry your I-card and you reach out to designated area where the food would be served to you. You will have to produce your I-card along with the coupon against which you will be given the lunch. Please note that you will have to come back at 2:45 p.m. sharp for the next session, which will start from this pandal. Sir, I request Dr. K. Girisan sir to kindly propose vote of thanks. Namaste. I deem it as a great privilege to be here to propose the vote of thanks in the inaugural ceremony of the 12th edition of the Bharatiya Chhatra Sansad, the largest classroom of democracy conceived by Sri Rahul Karad to inspire youth to become active citizens and dynamic leaders and to create political leaders for today and tomorrow. The seed of the School of Government was sown in 2005 with the objective of creating a pool of committed, ethical, dynamic and professional leaders, which was grown into a tree through Bharatiya Chhatra Sansad in 2005. I think over the last many editions of Bharatiya Chhatra Sansad, the tree has become a forest. And this is nothing less than a revolution. It's a non-violent revolution, but very powerful revolution. It's a revolution to transform youth to become clean leaders, committed leaders, ethical leaders, dynamic leaders, professional leaders, and leaders with a vision for tomorrow, for changing the political landscape of Bharat tomorrow. And I believe all those who are associated with these editions of Bharatiya Chhatra Sansad, including which is on today, they are on a mission. And Bharat is a country of 130 plus crore of population. And the contribution of School of Government and the Bharatiya Chhatra Sansad editions may be very small, but it is very significant. We have no doubt that the critical mass of the leaders who come out of this school as well as the Bharatiya Chhatra Sansad editions will make a difference tomorrow. Maybe it may be viewed as a small drop in the ocean, but these drops will definitely make a change in the ocean in the days to come. And let me just move on to my duty. On behalf of the Board of Trustees of Mayors, the Founder President, Professor Vishwanath Karad, and the Executive President and the Founder of MIT SOG, Sri Rahul Karad, and all Vice Chancellor and all academic leaders, administrative leaders, the faculty, staff, students, and all the delegates here, I propose vote of thanks, and especially to the Chief Guest of the day, Professor S.P. Singh Baghel, and Dr. K. Shivan, Dr. Anand Prakash Joshi, and Madam Kaushiki Chakrabarti, and Anand Singhania ji. In fact, they have from a galaxy, from varying disciplines, and they have shared their words of wisdom and expertise and their guidance and motivation. And we are blessed with the presence of Sri Daryada ji and Pandit Vasantarao Gadgil ji,
And I also appreciate the words by the student leaders, Nandita Jamwal and Dhirendra Singh. And I would like to place on record the inspiration behind the University, Professor Vishwanath Karat and Sri Rahul Karat for behind the initiative of School of Government as well as Bharatiya Chhatra Sansad. And on behalf of all of us of the Bharatiya Chhatra Sansad and Foundation, I express a warm welcome and warm greetings to all of you, all the dignitaries, and the delegates, especially to the delegates of 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad, and to all those academic leaders, administrative leaders, faculty, staff, students, and all those here, and especially to the friends from media. And I'm sure this 3-day program, this 3-day event, these 3-day interactions, discussions will be academically enriching, professionally satisfying, and personally beneficial to each one of you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, Dr. Girisan sir, thank you very much. I request all the media personalities, all those who are representing various media houses, are requested to come in the front. Honorable Executive President, Shri Rahul Karat sir is going to meet and greet you. I request all the media personalities, please come forward at the central podium in the front. Request all the media personalities, the representatives of various media houses are requested to come forward. They would be welcomed and felicitated by Shri Rahul V. Karat. See you all at 2:45 p.m. sharp. Thank you. अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरू